शल्यक वक्ता जो थी उनका और आज के नए सभी अतिथि वक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ओवर टू पवन शर्मा जी, हम निश्चित रूप से प्रमिला जी जोशी जी का जो कल भूल गए उनसे क्षमा याचना करते हैं। कल लिंक की कुछ वजह से नहीं बात हो पाई थी। पश्विना जोशी जी का, उनके साथ में हमारे दो और आज नए वक्ता लोग अपना प्रस्तुति देंगे। ओवर टू पवन शर्मा जी। नमस्कार, सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आयुष समृद्धि के 862वें पड़ाव पर आपका स्वागत है। ये बिल्कुल अलग वेबिनार है। पिछला समारोह सम्मान हमने किया जिसमें हमने आयुर्वेद के मनीषियों को सम्मानित, खुद गौरवान्वित महसूस किया। आज 13वां दिन है महर्षि सुश्रुत जयंती का। उसमें सुश्रुत के प्रिंसिपल्स के ऊपर डॉक्टर रजनीश गिरी जी उडुपी से वक्तव्य देंगे। कल डॉक्टर पश्मीना जोशी जी कुछ टेक्निकल कारणों के कारण जुड़ नहीं पाई थी। मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डॉक्टर स्मिता मोहन पीवी जो रक्त मोक्षण के विषय में हम लोगों को निर्देशित करेंगे। वी वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल on behalf of Independent Research Ethics Society, Dr. Rajneesh Giri ji, Dr. Pashmina Joshi ji, Dr. Smita Mohan PV ji, and I would like to communicate my sincere gratitude and regards to all respected legend gurus, Dr. Vasne sir, Dr. Thakral sir, Dr. Kulwant Singh ji virtually connected with us, Dr. Manoranjan Sahu sir, Dr. Sijoria sir, Dr. Lakshmikant Dwivedi ji, Dr. Vinit Agnihotri sir, and all legends of all faculties, not only Shalya, because this is only the platform of India which has been conducting webinars regularly without fail, and now within 3.5 years, we have been able to reach the milestone of 862, which is the unbeatable record. We have all world records in our name. So now the charm of records is not also with us. Please bless us that this infinite journey, knowledge sharing journey, inspiring journey will be continued till the end of the earth. Thank you. Thank you very much. I would like to request Agnihotri sir for brief preamble, and then Dr. Mahesh Sanghvi ji. The Mahesh Sanghvi ji is the pivot of this series of Maharshi Sushrut Jayanti. Definitely, I communicate my heartiest regards to him. Thank you. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी। जैसा कि अभी पवन शर्मा जी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग पिछले 12 और आज 13वें दिन लगातार आचार्य सुश्रुत जी के किए हुए कार्यों और उनके कार्यों का अनुपालन करने वाले शल्यकों के बीच में अपना समय गुजार रहे हैं। और उसी क्रम में एक चर्चा का विषय बन गया था कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि विबंध की स्थिति बनती है तो क्या करना चाहिए। बड़ा एक अच्छा चर्चा पे चला गया था कि मुख्य मार्ग से, ओरल रूट से कुछ भी लग्जेटिव देना है कि नहीं देना है। बहुत सारी चर्चा हुई और उसी क्रम में शायद उस सूत्र को साथ में लेके हमारी पश्मीना जी विशेष रूप से इस फील्ड की हैं, वो अच्छी बातें बताएंगी। कल संघवी साहब से और लक्ष्मण द्विवेदी जी से चर्चा हुई, मैडम पारुल जोशी जी ने भी चर्चा बतलाई, इसमें आगे बढ़ाया। तो पहले तो सिद्धांत रूप से आचार्य सुश्रुत जी के क्या सिद्धांत रहे, इस पर चर्चा करने के लिए रजनीश जी जुड़े हुए हैं और उडुपी से, और मैडम जुड़ी हुई है पश्मीना जी। आज तो नेटवर्क हम सोचते हैं ठीक ही रहेगा। आपकी बहुत तारीफ कर रही थी मैडम पारुल जोशी जी कि हमको बहुत ही अच्छा बोलती हैं, और दुर्भाग्य रहा कि हम लोग कल नहीं सुन पाए। हमें खुशी का आज आप साथ हैं। और महेश जी की ये सब इनका ही क्रियान्वयन है, इनका ही सूत्रधारिता है, और हम सब लोग ईगर हैं क्योंकि हम सब लोग परिवार वाले समझते हैं वो एक ऐसी फील्ड होती है कि महिला सगर्भा महिला के लिए कष्ट की स्थिति बनती है। तो आप लोग नया ज्ञान देंगे, आज नई चर्चा रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में विषय बहुत है, और आज साहू जी ने और कल मुरलीधर शर्मा जी ने परसों में यही बात सामने रख दी थी कि हम
सुश्रुत कौन है और सुश्रुत के कार्य क्या क्या है, इनमें शायद नहीं कभी अपनी वाणी से समेट पाएंगे। अनंत कार्य हैं, अनंत रूप उनके हैं, और हर शल्यक सुश्रुत है, हर शल्यक सुश्रुत का ही नाम लेके स्कल्पल उठाता है, इंसिजन लगाते हैं। तो ये मान के चलिए सुश्रुत जी जहाँ कहीं भी है उनके अनेक रूप हैं। ये कहते हैं एको हम बहुत श्यामा, वो स्थिति बन चुकी है। देश विदेश में आचार्य सुश्रुत का नाम लेके इंसिजन लगाने वालों के क्रम में हम सभी का पुनः स्वागत करते हैं, पिछले 12 दिनों से कर ही रहे हैं। और इस सब के प्रेरणा स्रोत हमारे डॉक्टर महेश सिंघवी जी, जिन्होंने बीएचयू से लेके और बनारस ये मुंबई तक सारा उनका अपना झंडा फहराया। और आज हमारे गुरुजनों ने जो आशीर्वाद दिए हैं, चोपड़ा साहब, ठकराल साहब, भाषण साहब, गुरवंत सिंह साहब, तो ये लगा कि हम सब अल्टीमेटली एक हैं, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद के कॉज के लिए काम कर रहे हैं, विधा कोई भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे की कार्रवाई के लिए प्रोफेसर पवन शर्मा जी और डॉक्टर महेश सिंघवी जी को अगला कार्यक्रम के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर महेश सिंघवी जी को मंच सौंपता हूं उनके वक्तव्य को। वास्ते जी गुरु जी है और चोपड़ा जी अभी ठीक है, उनके आशीर्वाद और परमिशन से हम शुरू करते हैं। सुश्रुत प्रिंसिपल मैं हूँ ना, मैं कहीं नहीं गया, मैं हूँ। परमिशन चाहिए सर, आप ऐसे ही हाथ कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल परमिशन। आपके आशीर्वाद के बिना मैं शुरू नहीं कर सकता गुरुजी। अरे नहीं भैया, बिल्कुल करो, करिए करिए करिए। नहीं ठीक है, अवस्था जन्य व्याधियां आती है तो वेगान धारियति करना पड़ता है। सॉरी सर, सुश्रुत प्रिंसिपल्स के ऊपर डॉक्टर रजनीश गिरी जी बोलेंगे, और वो जो है अपना विचार, ही इज एन वेरी गुड प्रोफेसर, very learned persons. I've met him number of in the conferences, and nowadays he is holding professor and HOD department of PG studies in Shalyatantra, SDM College of Ayurveda, Udupi. Without wasting the time, we are already late, so concise and precise शुरुआत करेंगे रजनीश गिरी जी। Welcome to रजनीश गिरी जी, platform for yours. Yes sir, thank you. First of all, good evening to all. Hope I am audible to all. Audible and visible both better. Yes sir, thank you very much. So first of all, I would like to say my pranams to my Guruji, Dr. Manoranjan Sahu sir. Whatever I am today is because of him. So first of all, seeking his blessings, I would be putting few of the principles. Most of the principles will be known to everyone. I am not adding any new principles because these are all principles of Sushruta. So whatever possible, my idea of understanding the principles, I'll try to put it forward and hope whoever is listening to it, it will be fruitful to all of them. So basically, I am presently working in the SDM College of Ayurveda. This is the SDM College of Ayurveda at Udupi. I am the HOD and professor there. So Sushruta, even before Sushruta's time, there was a lot of surgery being practiced in Ayurveda. But the credit is given to Sushruta. Why? Because it was Sushruta who, for the first time, he arranged all the knowledge and practices of the principles of surgery in a particular way, and he wrote it in the form of Sushruta Samhita and popularized and laid foundation to the principles of surgery. So it is because of this Sushruta is considered as father of surgery. This surgery not only is the general surgery, but it also includes the surgeries of ENT, surgeries of obstetrics and gynecology, of orthopedics and various other principles. So now, before we understand the principles of surgery, one of the most important thing what we always need as a surgeon is the qualities. So Sushruta very clearly says, Shauryam Ashukriya Shastra Taikshanyam Asvedam Avepotuhu Asamohascha Vaidyascha Shastra Karmani Shasyate. So it's not that everyone can become a surgeon, but among the medical practitioners, people who are strong enough, who have the ability to react quickly to emergencies, to the various decision makings, and who are strong enough to take decisions and follow them, only can become a good surgeon.
So shaurya is the strength to face adversities, strength to cut the tissue, strength to create pain in the patient from the point of view of healing him. All these qualities, when a surgeon has, a physician has, he would only then become a successful surgeon. So as Sahu sir was also telling, see, until and unless you have a good knowledge of anatomy, you can never become a good practitioner of the science of surgery. So it was Sushruta who for the first time laid a detailed method of preservation of the body. Maybe before that, there is hardly any reference for the method of preservation of the cadaver. So the body, how it should be prepared, and how the dissection has to be done layer by layer, so that all the tissues from the level of the skin, subcutaneous tissue, muscles, arteries, till the level of the bone, dissecting it and understanding the anatomy was considered a very important aspect for a surgeon. So even today, if a surgeon has to be successful, the knowledge of anatomy is the basic foundation or the basic qualification which is expected from a surgeon. And giving a definition, many times what happens is, as soon as somebody asks what is shalya, shalya is very superficially translated as a foreign body. See, if you take Sushruta's definition, he says tatra manashalya abadakarani shalyani. So anything which prevents the normal functioning of the body and the mind is considered as shalya. Therefore, the shalya tantra is not only a surgery where you are cutting and removing the tissue. So any science or any method which you adopt to remove a bada, a obstruction to the functioning of the physical body or the mental faculty, is all a part of Shalya Tantra. So whether you remove the vitiated doshas, whether you remove vitiated mala, whether you remove dukkha, whether you remove krodha, or whether you remove any of these physical foreign bodies which have entered into the physical body and create complications, all of them will come under the definition of Shalya Tantra. So Shalya, translating just as a foreign body, is an incomplete understanding of what Sushruta wanted to say by the word Shalya. Now, apart from that, see, Sushruta has explained various surgical instruments, maybe sharp instruments, shastras, or maybe blunt instruments, yantras. See, I'm not going into details of these because it would become elaborate. But one thing what we have to understand was that, like today's surgical practice, we don't have surgical stores where we can go and buy the instruments. So the surgeon had to create his own instruments. So when he says the qualities of the metal which has to be used for making an instrument, he says Shuddha IS. That means Mala Rahita IS. That means to say they were the knowledge of metallurgy, as Sahu sir was also saying, the knowledge of metallurgy was so perfect that they knew what was the ore, they knew how the metal had to be extracted from the ore, and especially in cases of iron being used for the manufacture of instruments, they knew that the instruments had to be such a way that it should not get rusted, because rusted instrument today we know gives tetanus and various other complications. So during that time also Sushruta had faced that. So he was very clear that when an instrument had to be made from loha, it had to be free of any form of mala. So thus this shows how skillful they were, not only in the science of medicine and surgery, but also in the field of metallurgy. Apart from that, Sushruta has laid great importance regarding aseptic measures. These aseptic measures are not only from the point of view of the surgeon himself. See, he says your nails should be cut, the hairs should be trimmed, any of the beard, etc. They should all be trimmed so that you can maintain cleanliness during the procedure of surgery. So it's not only the physical cleanliness of the surgeon, pre-operative preparation of the patient, he is also given very importance to the
preparation of the operation theater. See, just as we fumigate with formalin and potassium permanganate and various other materials today, during that time also, the OT used to be fumigated with sarshapa, nimba, grita, gugulu, etc. So by this method, the OT was being sterilized, apart from the instruments also being sterilized. And he also knew that the instruments, if heated directly or indirectly, Agni Tapta Shalakas. So if you use instruments which are boiled, which are exposed to heat, Paka Bayam Nasti. That means to say, he says, when such an instrument which has already been sterilized by an effective source of heat, there is no chance of Paka, there is no chance of infections. So instruments had to be prepared with a Malarahita Dhatu Loha, and then you had to sterilize it, and only then it had to be used in the operation theater without any complications. And Sushruta was very clear that just by learning the principles of Sushruta, one cannot become a surgeon. So he was very clear. He said that you have to stay with the Guru and learn the principles, read the Shastra and learn the principles, and you should see how your Guru does the surgery. And after that, he says that he has laid down certain practical models, Yogya. Okay, so you have to become a Yogya. You have to learn the skill on certain models or mannequins. And once you are learned the skill on these mannequins, only then you are capable, or you are allowed to do the surgical procedure on human beings. So thus, in the surgery, it has been very clearly told by Sushruta the steps like what today are available in the form of pre-operative measures, operative measures, and post-operative measures. And in the operative measures, he has told the Ashtavida Shastra Karma, which encompasses all the surgical procedures which are done today. In this, I would like to lay this shloka. Whenever a incision is made, he has given the qualities of an ideal incision. He says, Ayatascha Vishalascha Suvibhakto Nirashrayaha Prapta Kala Kritascha Api Vranaha Karmani Shasyate. So an incision which is made should be long enough, should be broad enough that you are able to reach the deeper tissues to do the surgery. It should separate the tissues well. It should lay open all the cavities. And most importantly, it should be done at the right time. Only when you make an incision in this way, then can your surgery be successful. Plus, he also gives an important shloka in the form of, while making an incision, he says, Yato yato gatim vidyat utsango yatra yatra cha tatra tatra vranam kuryat yata dosho na tishtati. So today we have various methods of incision, various methods of IND. We give credit to Hilton, we give credit to various Western people who have done the surgery. But Sushruta, very clearly he says, wherever you see the tracks, wherever you see induration, wherever you see swelling, wherever you see collection of pus, you have to lay open them so that none of the cavities have any remnant doshas, because any remnant pus, any remnant dosha would always lead to the movement of dosha to the deeper tissue, resulting in the formation of cavities, resulting in the formation of sinuses. Plus, in order to have a incision which is healing faster, which does not result in the formation of a bad scar, Sushruta has given very clearly how you have to make a vertical or a horizontal incision according to the body parts. Today we know there are lines which according to which we have to make an incision. Sushruta also says, if you don't follow these lines, he says the wound chiracha vrana samroho, the wound healing takes longer time, plus mamsa kandi pradurbhavaha, there will be formation of scars, hypertrophied scars. So to prevent any cosmetic disfigurement, Sushruta, though he has not used lines of Langeran or any other such technical Western name, because it's the later science, he was very clear that every anatomical site had a particular way in which you had to make an incision so that the wound healing would be acceptable in cosmetic way. Plus, Sushruta has given great importance to
the suture material, the suturing needles, and the various ways. If you see, today we have multiple types of suturing. Even during that time, Sushruta was very clear. He says a method of suturing called Ruji Granthi, which is nothing but simple interrupted sutures, what is told today. Then you have Anuvelita, which is nothing but a continuous form of suturing. Then you have the Gofanika, which is the blanket sutures, and Tunnasevini, the subcuticular sutures. So whatever sutures which have been told by Sushruta, except the name being changed or name being westernized or Englishized, the skill and the method of suturing which have been told, which have been laid down by Sushruta, continue same today. Maybe there are few additions, but the principles are based mainly on what Sushruta has told. Apart from that, from the point of view of managing a wound or from the point of view of managing fractures, Sushruta has told about 15 varieties of bandha, which is very important even today. I'll not be going into the names because they are very clear, but we have to be very happy to know that depending upon the anatomical sites, depending upon how you want to keep the medicine or keep the part immobilized, he has explained various methods of bandhana. And in this, very important is many times the postgraduates or many of the time the students, they are in an urgency that the bandaging has to be changed early because they feel that if the bandaging is changed early, probably the wound would heal faster. So Sushruta has very clearly told, if early change of the dressing is done, then he says there is chirat upasamrohati. That means to say there is going to be a destruction of the new tissues coming up, which will delay the healing and create lot of pain. So even today we understand that early changes of the bandaging material actually disrupts the proliferation or disrupts the healthy granulation tissue, which actually slows down the healing process. Apart from that, he has given great importance to the ward, post-operative ward. See, many times Vranita Gara, we don't give much credit to Sushruta. Sushruta has very clearly told Vranita Gara is not only a place where a wounded patient is, wound in the sense the ulcer and wound. Any patient who has undergone surgery is also a Vranita. And Vranita Agara, the post-operative ward, Sushruta was very clear that you had to have special sterilized aseptic wards where post-operative patients could be kept from the point of view of seeing to it that the wound heals or the surgical outcome would be better. Then there is limited knowledge regarding the anesthesia which is to be given. Okay, and a great lot of importance is given to the written consent. Plastic surgery, everybody knows the repair of the nose, repair of the ears, pinna, etc. If you can see the principles, the pedicle grafting is even today adopted, and therefore great credit is given to Sushruta for plastic surgery, and he is also considered as father of the plastic surgery, the nose, repair of the pinna, etc. And the examination of Vrana. I think I'm running short of time, so I would like to just rush across so that you could know few more principles which have been told. Then, as said, the craniotomy for the management of the intrauterine death of the fetus. Okay, this is something which is being taken up by modern science, which I think we Ayurvedics have somehow not been able to do. The maggot therapy. There is one doctor in Karnataka, Dr. Srinivasan, who is doing maggot therapy for the management of wounds and neoplasms in a great way. And it is very nice to say that the first slide, he always thanks Sushruta, saying that I have taken the principle from Sushruta. So it is very nice that the maggot therapy is gaining great scientific awareness in the modern science, which probably we need to take up. Apart from the management of burns, the management of bleeding. Okay, then as sir was also telling, the cataract crushing surgeries. Okay, management of fractures. If you have seen, Sushruta gives great importance to open fracture, closed fracture,
the methods, the 3 R's which are told even in the modern science is same as told in Ayurveda, like Stapanopaya, Bandhana, and the karma being brought back. Then the osteotomy, where a deformed bone has to be refractured and the treatment has to be done. Okay, this is the Kapata Shayana, the external splints. Apart from that, you have various other surgeries which have been told. Apart from that, you also have not only the surgeries, you have minimal invasive surgeries like Shara, Agnikarma, okay, Jalukavcharana, etc. being told for the management of various surgical conditions. So with if I have taken a lot of time asking for a little forgiveness, I would like to stop my presentation here with thanks to Dr. Mahesh Sanghvi sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. I was expecting कि आप कुछ पंचवल्कल के बारे में कुछ वुंड हीलिंग की बोलेंगे, लेकिन फिर कभी आपको इसका मौका दिया जाएगा और आपने बहुत अच्छे से सुश्रुत के बारे में बताया. ओवर टू पवन. बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा गिरी जी. आपने you have explained nicely and scientifically the logics and concepts of Sushruta. Definitely welcome. Please do join every day. We are conducting webinar on new topics every day, so please do join. Mahesh sir. Thank you. So now I Thank would you like very to much. request रजनीश जी, Thank you, साल में sir. 2 से 3 बार, 2 to 3 times I use maggot therapy in my clinic. Very nice, sir. When there Thank is you. the pre-gangrenous and bad fistulas and not bad healing wound, I used to use the maggots, or sometimes patient come with the maggots, and that was been headache, so I will put the turpentine. Patient चिल्लाता बहुत है, लेकिन धन्वंतरी भगवान को प्रणाम. Thank you very much, and be join with us. Anybody questions you have? I think so. question answer should be in the last, sir. Okay, thank you very much. So now I request to Dr. Pasmina Joshi, आज कोई technical खामी ना हो. She is an excellent smiling face teacher, and she is working in Jamnagar. Excellent surgeon and excellent styles. And particularly I request her, because कल आप नहीं थे तो बहुत सारी उसके बारे में चर्चा विचारणा हुई. कुछ हमारे पास अल्प ज्ञान था, वो हमने शेयर करने की कोशिश की. आज हमसे आपसे जानने की कोशिश करेंगे. डॉक्टर पश्मीना जोशी, प्लीज. सर वेलकम डॉक्टर पश्मीना जी, वेलकम. हाँ सॉरी. नमस्ते सर. नमस्ते पवन सर. नमस्ते अग्निहोत्री सर. नमस्ते महेश संघवी सर, and Rajneesh sir, and Mohanta madam, whoever is there right now, Varshne sir, all respected teachers. Shijoria sir is also here after a very, very long time. I hope I am audible properly. You are audible, visible. Okay, okay. Thank you very much. સૌથી પહેલા તો સર જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ બેટા, જય શ્રી કૃષ્ણ. God bless you. માં સરસ્વતી તારી ઉપર રહે. લાઈટ એવી રીતે ગોઠવો બેટા કે તમારા ચશ્મા ઉપર રિફ્લેક્શન નો આવે, અથવા તમે બેસો એવી રીતે કે કોમ્પ્યુટરની લાઈટ તમારા પર નો આવે. Okay, okay. Excellent beta, excellent. Thank you very much. I'll try. Yes. Sir, thank you very much for giving me a chance to share my views. As a woman, I come across so many patients, a woman, anorectal practitioner, and as a proctologist. Yeah. So I come across so many women, so many pregnant ladies who suffer from constipation, who suffer from so many other associated conditions with anorectal diseases. And that is why I chose this subject for speaking regarding constipation and pregnancy. I had already had done some research about it. And thank you, Sanghvi sir, for giving me a chance to share my research. Thank you very much for identifying and sharing. I would share my screen now. I hope my screen is visible. Yes, you can go for slideshow. Okay, sir. Okay.
Now, management of constipation during pregnancy. I myself am Pashmina Joshi. I am working as a reader in Shalya Tantra in the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, ITRA Jamnagar. And I don't know what hype has been done, but all that I have learned is from all of you teachers. I'm quite a junior person otherwise. So, but practicing since 20 years, I finished my PG in 2004. The subject today is particularly aiming towards making pregnancy easier. Not only constipation, UTI, etc. There are so many other things that occur during pregnancy, and one of them is constipation. And I would like to help my female patients, pregnant ladies, to have a nice, happy motherhood. Now, motherhood is the most beautiful time of a woman's life. The body itself, मैं हिंदी में कहना चाहूंगी, अवतार ही इसीलिए मिलता है सर फीमेल को। एक उसका मेन पर्पस शायद ईश्वर का यही होता है कि आज मानव जाति को वो आगे बढ़ा सके, तो इसीलिए वो एक सबसे सुंदर काल, इट्स द बेस्ट टाइम. But some conditions make it most difficult time of life. These are termed as Garbhini Vyapad and Sutika Vyapad in Ayurveda. There is some uncertainty among obstetricians, proctologists, and other concerned about the most effective management of anorectal complications that might affect the normal course of pregnancy. यहाँ एक सुंदर सा गुलाब आपको जरूर दिख रहा होगा, लेकिन गौर से देखेंगे तो नीचे एक कांटा भी लगा हुआ है. इस सुंदर गुलाब के नीचे जो तकलीफ दी जाती है, जो तकलीफ होती है किसी स्त्री को, वो स्त्री ही जानती है. जो रेफरेंसेस मैंने जहां से लिए हैं, यहाँ मैंने उनको इन विधाओं को, इन पुस्तकों को, या थोड़ा बहुत इन चैप्टर्स को मैंने पढ़ा था, तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए. गर्भिणी व्यापद के बारे में यदि हम बताया जाए तो एज पर निदान, जो जहां विबंध बताया गया है कि ये निदान जो है विबंध के निदान है, उसी निदान की वजह से कॉन्स्टिपेशन को देखा जाता है. जैसे कि सबसे पहला निदान जो होता है वेग विदारण होता है कॉन्स्टिपेशन या विबंध के लिए. सबसे कॉमनेस्ट जो निदान होता है वो वेग विदारण होता है. प्रेग्नेंट लेडीज में ये ज्यादा देखा जाता है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी डबल रहती है. अपना रूटीन काम के अलावा भी उनको ज्यादा थकान महसूस होती है, चाहे वो निद्रा का वेग विदारण हो, चाहे वो क्षुधा का हो, चाहे मलमूत्र त्याग का हो. किसी भी वेग विदारण की वजह से उदावर्त और उदावर्त की वजह से विबंध को जाना गया है. रुक्ष अन्न, दिस इज द सेकेंड कॉमन निदान which is nowadays very common amongst urban life, women who are living urban life. Pishtanna is pan India common. It is common for every household in India right now, that Pishtanna is consumed as a daily food. So that also is considered as one of the causative factor for Nidan, and maybe that is why constipation during pregnancy is much more frequent in these days and much more a graver or a serious condition or having more frequency. Then comes Garbha is a Nidan for Arsh. One of the Nidan for Arsh is Garbha according to Acharya Charak. So they are also believing, and Acharya Vagbhat also. Both of them believe that Garbha is Nidan for Arsh and Nidan for Vibandha both. So anorectal disease again. Naturally, Vata gets vitiated in the 4th and the 5th month of pregnancy along with Daurade. This is according to Kashyap Khilasthan, chapter number 10. And Adhimamsa Arsha is common in 7th month according to all the Acharyas. All the Adhimamsa Vyadhi will occur in that time. Now, to prevent this, I would say they knew this was going to happen. Modern science, modern references, and modern point of view I will explain later on. But our Acharyas had observed it keenly, closely, and thoroughly.
and designed the management prior to its happening. They prevented it before happening, and that is why a very strong and elaborate Garbhini Paricharya has been given. All the diet for Garbhini Paricharya, basically, it is Vata Shamak diet. Because if Vayu gets vitiated, exactly the Garbha may get expelled, or Garbha may stop growing, or Garbha may become, there are so many other things that a Garbha may suffer if the Vayu becomes vitiated. So Vata Shamana is considered to be a very important part of a Garbhini Paricharya. All palatable liquids, things, liquids, sweet, should be liquid or more snigdha and madhur and anxious. No, they should be more towards the liquid side and more towards the snigdhata from 1st to 3rd month. And what they have said is milk, grita and navanita. They have prescribed it for daily consumption, for every meal consumption, that either milk or grit or navanita or milk with meat with sour or salty articles should be taken by a Garbhini, so that the Vayu remains Shanta, Vayu does not become vitiated, and there is Shaman of Vayu, because Vayu naturally will increase. The increase of Vayu naturally, we can understand that the sthana for Vayu is Payu, Upastha, or the Bruhadantra, or the Uttarguda, Adarguda, as described by Acharya Charak. Now, or Pakvashaya, as described by Acharya Sushruta, where the Apan Vayu is staying. And the Apan Vayu is though it's not the main Vayu, Pran Vayu is the biggest Vayu, which is making all the things function. But Apan Vayu is the Vayu which is sitting in the house. So a brother or a person sitting in their house, living with the parents, is always more powerful, affecting the entire family, than the one who is actually elder one or living away. So as per my concept, the Apan Vayu is the strongest Vayu, the one which can create a lot of problems. And that is why Apan Vayu will always become stimulated. I don't say vitiated, but stimulated whenever Garbhadharana is there, because there will be avran to this Apan Vayu, and the Garbha will be maintained or retained in the Garbha for all the 9 months, for the entire time of development. So, and whatever movement it will do, it will not let it out. So there will be an avran to it, and there will be accumulation of Apan Vayu before the entire Garbha is expelled out. So naturally, Vayu may get Vikruta or Vishama, because that Apan Vayu is, Avrita, the movement is restricted, and that is why it is becoming more and more powerful. From modern point of view, when we see how the progesterone is working, we can fairly understand how and why our Vayu, the concept of Apan Vayu, or the Vata Shamana concept was employed very much initially in the 1st to 3rd month. In 3rd and 4th month, Shashti rice with milk or curd are to be given to the pregnant lady. Yavagu, Payas, again milk. We can see here that recurrently milk and milk products are prescribed by our acharyas for the maintenance of the Garbha. Now, this is not just maintenance of the Garbha. They could have given so many, folic acid or some drugs which can be given. They may have prescribed that, but they have not done it unless and until complications develop. So for proper development, they say that a female needs good oxytocin level. And today we know that milk and milk products are stimulant for oxytocins, and this oxytocin is good for maintenance of the female physiology, apart from giving nutrition to the female and imparting nutrition to the Garbha simultaneously. So 6th month, Grita or rice Yavagu with Gokshura should be given. Prithakparni group of drug which are cooked with milk, again milk. So again and again acharyas are prescribing milk and milk diet for curbing Vayu, for the controlling Vayu, they are saying.
clearing of retained feces is very important in 8th and 9th month. That means there will be retained feces in a female which is pregnant for 8 or 9 months. It is Vatanoloman with Anuvasan or Niruha. This, now we can see here, this is Garbhini Paricharya. She is not suffering from any disease, but still all these things are prescribed because they knew constipation will happen during this period, and very easy methods to remove them, topical methods to remove them, or dietary methods to remove them without giving any strong medicine. But it doesn't mean that they did not know if the complication occurs, like if there is pain, if there is too much discomfort, then what is to be done. Harit Sanhita in Tritiya part, Tritiya Adhyay, this in 50 in the third part, or in the 51st Adhyay, the 10th slok is Haritaki Nagaram Gudenava Trifala Kashayam Shita should be given to the Stri Vinihanti Apane Vibandha Vidradhi Cha. So they knew there will be constipation, and in a female suffering from constipation, what drugs can be administered? Trifala Kashaya mixed with Guda, or Haritaki and Nagara mixed with Guda can be given to the female who is suffering from constipation. A whole decoction of Trifala mixed with Haritaki, Nagar and Jagari cures constipation as well as Vidradhi in a pregnant female. Now comes the Samanya Chikitsa. If this becomes a disease, not just a symptom, so not just a symptom of constipation, but a disease with all its other complications like Agni Mandya, Katishula, Sakti Sadanam, all these things, if they start appearing and it progresses or becomes aggressive, then what is to be done? Aushadha, Ahar and Vihar. All the three are prescribed, but the things that to be kept in mind are they should be Mridu, Madhura and Shishira. This is what is prescribed by him. Shishira here stands for Shitavirya drugs. So Madhura and Shitavirya drug, which is eliminating constipation, specially used for children, is Aragvad. But if Aragvad is not working, constipation is growing more than what Aragvad can cure, then by the 4th month, a female can be administered Erandatail with milk. And this is not only orally, it can also be given as a laxative, as a basti also in small amount. In the 5th month, Amla, Lavana, Niruha also can be given. This is by Acharya Kashyap. Acharya Sushruta has not prescribed any basti for a pregnant female till the 7th month. But Acharya Kashyap, who was exclusively practicing obstetric and Kaumar Pratyaya, has practiced it as early as 5th month. One of the reference he has given in 3rd month also, that is in the 1st trimester also, he said some amount of basti can be given in the form of the basti which can be given daily, that is Matra Basti. Matra Basti can be given during pregnancy in the 1st trimester also. But I think, as Acharya Sushruta always said, Tad Vidaha, Tena Vidaha, Tena Janata. So Acharya Kashyap was Tena Janata. So if as a proctologist I have to do this, I will always take reference or help from some person from the SRPT department, and with their consent or with their brain inputs, I would do it. So yeah, 5th month Acharya Kashyap has prescribed basti. And Madhura Nuvasan Basti, he said, can be given in large amount. In 6th month, Anushastra Karma Chikitsa for Arsha also is prescribed, and Shastra Karma by 7th month if Arsha is taking seat after constipation. That means it is going into the Parikartika or Purvaruk for Arsha, like that. Now, from the modern point of view, constipation, hemorrhoid, fissure in ano, cryptitis and pruritus ani are common anorectal ailments during pregnancy. I repeat, they are common anorectal ailments during pregnancy nowadays, and largely contributed by the lifestyle, the urban lifestyle, the speedy lifestyle, and the females becoming more independent. I am not against it at all.
I am myself one, and becoming ambitious. So all these things, the dietary habits, the lifestyle, the compromises that a female has to do during her pregnancy days when she needs to rest, and the Vegvidharan for sleep, etc., that she has to do when she has to perform in her regular duties. So constipation in pregnancy, 1 in every 3 women suffer from constipation during pregnancy. This is the data. Every 3rd woman, that is 30% of total pregnant females are suffering from constipation. Now, what is the link between pregnancy and constipation? Physiological and hormonal changes. These are very important when we are thinking of constipation, and some pre-existing conditions may also contribute to constipation during pregnancy, and they include if they have faulty dietary habits from before pregnancy, if they have some hormonal imbalance even before pregnancy, if there is a lifestyle factor. I'm not going in detail because all of you are here, most senior people, and what I am expressing here is something what you people are already practicing, and I feel privileged that at the end maybe I will get some inputs from all of you knowledgeable people regarding what I have presented. Dietary factors like insufficient fluid intake because of nausea and vomiting. In the first trimester, the nausea and vomiting may reduce the total amount of hydration in the female, and the amount of fluid intake may also decrease. Nowadays, it is a protocol to give vitamin supplements, folic acid, high in iron, and this again increases the amount of nausea, vomiting, and loss of fluid. Hormonal changes like variation in the levels of certain hormones such as estrogen, a naturally occurring hormone produced by the ovaries, and progesterone. I would like to give reference to this paper, particularly the article that I had read. There are so many describing this, but this particular article by Pope CE said that the profound effect of pregnancy on gastrointestinal tract, particularly the incidence of colonic and anorectal infection and diseases. He has given in the Postgrad Med Journal, and in 1954, this article was published. They say, under the effect of progesterone, the smooth muscles of the uterus start expanding and multiplying, or start relaxing first. This effect of progesterone on smooth muscles of the uterus is equally effective on smooth muscles of the bladder as well as on the smooth muscles of the large intestine, especially the one that is supplied by the inferior mesenteric artery. That means the part of the large intestine, that means the distal 2/3 of the transverse colon, the splenic flexure, the descending, the sigmoid, and the rectal part, all that area which is supplied by the inferior epigastric artery or the lumbar plexus, under the effect of progesterone, all these smooth muscles will start relaxing, and this will lead to obviously retention of stool because the mass peristalsis will not occur at that time. So a female hormone that prepares the uterus for pregnancy will naturally cause retention of urine and retention of stool, leading to constipation. So it's like very clear thing that the progesterone is the hormone, and if during pregnancy, if there is any threat of abortion, nowadays the excessive progesterone is given in the form of injectables or oral pills, and this or hormonal therapy, all these things, and that is why the constipation is much more prevalent. Slowing down of gastrointestinal motility, that is activity, is occurring due to the relaxation of the smooth muscles. Now, not only that, if we read the Sadhya Gruhit Garbha Lakshana, our acharyas have clearly stated that under the effect of raised progesterone, the
blood vessels will dilate, the pupil will dilate. So if all these smooth muscles, all these intrinsic muscles are relaxed under the effect of progesterone, the most muscular area, that is the small intestine, will obviously get affected, as well as the large intestine, and the mass peristalsis will always get affected. Progesterone and the pregnancy hormone, what does it do? Relaxes muscle throughout the GIT. It results in slowing down of the digestion. Relaxing of the valves occurs, and that is why undigested food also enters into the small intestine, the large intestine, which further delays the hormonal or the local acting enzymal activities. Reflux occurs, and reflux will further lead to loss of fluid, and loss of fluid and all these things together lead to constipation. The reference from where I got this is a paper published in 1956. Lifestyle factors, that is decreased physical activities and stress. Motherhood is not simple thing like just getting pregnant. There is a lot of stress along with it. There are so many insecurities along with the motherhood and the pregnancy that they come together. So lifestyle factors that contribute to constipation are stress. Other factors like actually simple physics. Anything that has mass will occupy space. Okay, and the uterus, which is a size of 1 inch by 2 inch by 3 inch, will grow up to the size which will carry a baby of around 3 kgs and other fluid of around 2 to 3 liters minimum, maybe sometimes more than that. So that big area, the placenta, everything will occupy space. And as shown in the picture, all the digestive system will be pushed back by the growing baby, and physical obstruction or mechanical obstruction to the digestive system, to the entire gut will happen. Even the stomach will get shrinked and it will be pushed away. So uterus will cause physical pressure over the and mechanical obstruction to the GIT. Painful hemorrhoids, like pre-existing condition, like if female was suffering from hemorrhoid or anal fissure even prior to pregnancy, or taking drugs, she was on drugs including blood pressure medications, antidepressants, pain relievers and antacids, or overusing laxatives, that is rebound effect. Now she may not be able to use those laxatives, and then the constipation would occur for sure. Can also contribute to constipation. The treatment according to modern science, which is practiced nowadays, is they prevent constipation or straining. They ask the patient, or we ask the patient, to drink more fluids, walk and exercise regularly, include Kegel's exercise, eat high fiber diet, isabgol husk or lactulose for laxation is given very commonly by the modern medicine people, or they are helpless where Ayurveda plies in, and we have so many formulations for relieving constipation. This is a simple Kegel's maneuver or Kegel's exercise. This is the position, and these are the steps for Kegel's exercise. I will not go in detail. आप सब सूर्यों के सामने दिया जलाने की बात थी. So I am a very small, just a flinch, and cherishing the womanhood. Thank you very much for patient listening. I rest my speech here, and with the permission from the chair, permission from the moderator, I stop my speech over here. Thank you very much for listening. Thank you very much. Thank you very much. Join with us because there may be questions or some queries from your viewers. But before that, with the permissions of Pawan Sharma and Subhash Chandra Vasneji, I will request today's last pictures and seminar, SUSHRUTA Jayanti Samaram. The last speaker is Dr. Smita Mohan PV. She is a professor, Department of Salya Tantra, PNMS
NM Ayurved Medical College. Very bad to pronounce it, South Indian Sahar name, Shunur. She will be explain about the Rakta Mokshana, and I was being taught by Mohan Kumar from Trishur, and in first time in Bhubaneswar, couples years back, and I trained by his relative from the Rakta Mokshana. So she will be explained with his blessing of Rakta Mokshana. Dr. Smita, please. Good evening, teachers. Myself, Dr. Smita. I'm sharing my presentation. You can share your slides better. Yes, sir. 1 second, sir. And clear your relationship with your Mohan Kumar ji. Dr. Mohan Kumar sir is my dad, and last date of the Increase your volume here. Your voice is very good. volume. Increase your volume. Yes, sir. Yes, sir. Is it all? Thank you. Your slide is very good and clear. Go ahead, please. Yeah, sir. Last day, Sangvi sir called me and told me to discuss about the experience of my dad regarding Rakta Moksha. Here I have given a humble trial regarding that. So here I go. Oh, Rakta Moksha, a practical story with his blessing. Dr. Mohan Kumar sir is on the slide, and she is my mom, Dr. P.V. Prasanna. She retired as principal from Vaidyaratnam Ayurveda College, and my dad as vice principal from Vaidyaratnam College. And they have served other institutions also. So I've packed my contents as possible, and here I go. Rakta Moksha is mentioned as treatment principle among Panchakarma by Vagbhara and SUSHRUTA Acharya, and due to the Ashraya Bhava between Rakta and Pitta, for any Pitta Dushti and Rakta Dushti, we can choose Rakta Moksha. And the classifications are Shiravyata, Prachana, Jalauga, Khadavacharna, Shringavacharna, Labhavacharna. And now it's time to think which path you should choose. As all teachers knows that Jalauga is preferred for Pitta, Dushti, and Shrinka for Vata, Khada and Labu for Sleshma, Dushti, Prachana if it's localized, as well as Siraveta if it's Tridosha Dushti or Sarvadehika. And the other thing to be considered here is that while using Jalauga, it covers Hasta Pramana area. It will be drains blood from Hasta Pramana. So in case of gangrene, if you are applying Jalauga, we have to apply it from the normal place in a width of Hasta Pramana till the last point, distal point, where it should be applied. And in case of Alabu, and I hope it's for Khara too, it covers 12 angulas. And Shrinka 10 angulas, and Prachana 1 angula. So this should be kept in mind while choosing these treatment procedures. And the selection of the patient, and it should be depending upon how the patient is. It's his or her mental condition, physiological condition, and pathological condition. And almost the site is preferred. Almost the disease site or lesion site, or just near to that point. Considering the yoga, we have already discussed Pitta and Rakta Dushti, and even that's for, and other thing about the yoga is all the Shita and Ushna treatment phase, we can prefer Rakta Moksha. And according to the Kala, it should not be done in severe cold as well as hot climates. The basic investigations to be done is HB count has to be checked, CT and BT, HIV, HBsAg. First 3 for patient safety and the other 3 for doctor safety.
Indications, age group between 16 and 70 years, yes, mentioned in the classics, but I have seen my dad performing surgeries just below even 60. In condition, if the condition prefers, I think we can go for that too. And the contraindicated case is bleeding disorders, and if the patient is taking any thrombolytic medicines, physiological conditions like pregnancy, menstruation, as well as psychological conditions should be considered while going for rectomoksha procedures. Attention to be taken in case the things to be carried is that we have to get the informed consent. The diet should be, my dad used to be very particular about the diet. He asked the patients to have the diet just before the procedure, and Drakshari Kashaya can be given as medicine, and TT injections, and preferably to cover the eyes of the patient. And while pricking, it should be gentle, uniform, and it should be shallow, as well as it should be longitudinal pricks. If it's horizontal, there are chances to cut the veins off. In theory, it said to do rectomoksha in case of Siraveda for once in 6 months, and this will help to keep away Tok rogas, Granthi, Shofa, and the rogas. Jalauka Vacharna. Usually, Jalauka drain, if sucks for 30 minutes, it takes off 15 ml of blood. And Hirude medicinalis is used for this purpose, and it's used basically used for in patients with poor threshold of pain. These are the boons of Jalauka Vacharna: analgesics, and anti-anesthetic, anti-inflammatory, antimicrobial, thrombolytic, vasodilators, anticoagulant, and it also enhances circulation. It improves the circulation. These are the few cases that I have seen my dad using Jalauka Vacharna. This is a case in which he had use Jalauka Vacharna for pain. Trigeminal neuralgia. And these are the complications which I have seen when he was practicing. That is prolonged bleeding. Few patients may have prolonged bleeding, so we have to be very careful while checking, while doing the procedure. And bite scar may be there, but it will be vanished in few days' time. Allergic reaction. I have seen a patient with so much swelling after doing this procedure. And cellulitis, infection, fever, pain, itching, and other inflammatory conditions are the things which I have seen. Alabu and Khada. These both are used in Kapha dosha conditions, and it's contraindicated in Pitta dosha as there is Agni Samparka while doing the procedure. And the complications which have come across is burns if the patient is not kept properly while doing the procedure. Shringa Vacharna is used for Vataja Vyadhis, and if there is any Sukti or Spashak Jnanam and all, we can choose this Shringa Vacharna. And when the dosha is in Tok level, we can choose this. This is used for low backache as well as cervical spondylosis. These are the indications of few cases which I have seen my dad using the Shringa Vacharna. Sir, am I audible? Audible, very good, nice. Go ahead, beta. Sir. Prachana. Prachana improves the local circulation. It has, and after Prachana, if you are applying the medicines, it will be absorbed properly. And Vagbhadacharya mentioned Prachana as Kuttana Karma also. It's used in intralupta cases, Vadashonida, psoriasis conditions, etc. While pricking in Prachana, we have to be very careful that it should not
overlap, the previous breath should not be overlapped. And so often if we wipe off the blood, means it can be, it will promote more bleeding. These are few conditions that I have seen my dad doing pratchana. Siraveda. It's done from the circulatory system, and when the dosha is present all over the body, it can be done once in 6 months in general cases too. Indications of Siraveda are Siragranthi, Anidra, Vatarekta, psoriasis, low backache, hypertension, hyperactivity, and in psychiatric disorders also, we prefer Siraveda. Contraindications are if the patient is weak or uncooperatable, or there are chances for the patient to go more weak, means we have to avoid this case. It's a psoriatic case in which Rakta Moksha was done by classic methods. These are the only till 200 ml, but I've seen my dad evacuating even 300 plus ml of blood. Complications are hematoma, fainting, sweating, and it may even go to hypovolemic shock if not done in a proper technique. For doing the Rakta Moksha, we can prefer a 10 ml syringe or cut. If its end is cut open, we can use it as a suction apparatus, like the breast pump can be used, funnel if attached to a suction apparatus, scalp vein set, needle, shaving blade, etc. Whatever it's hygienic and sterile, we can use for the procedure. My dad also used to say about Lekhana Karma. If the patient is not at all fit for any of these Rakta Moksha procedure, he used to prefer Lekhana Karma. That is in case of numbness, itching, and if there is a loss of sensation and all, he used to go for that. And with any rough things of like stems, leaves, buds, ahiphanum, cow dung and all, he used to prefer that. So I will move to my discussion that considering the dosha, dada, and roga lakshanas, we can choose any of the Rakta Moksha procedures. And in practicing in Ritucharyas, it prevents as well as it as diseases. It is also considered as Ardha Chikitsa when all other treatments fails. The Lokavachana is the safe and easiest method amongst these, and it has action on inflammation, pain, swelling, pigmentation, itching, etc. I think my dad has put forward much about the concept of Anuyantra. This therapy has immense potential to treat a wide range of challenging medical as well as surgical disease conditions. Conclusion, it's a simple procedure, patient-friendly, cost-effective, and can be done as OPD procedure. And it gives immediate and long-term relief. And in short, the Rakta Moksha gives Shroto Shodhana Karma, and it's a treatment of choice. Thank you. Thank you very much, Smita. It was very good. Now Thank you you, get in sir. confidence, you can do it now. Yes, sir. Okay, so never lose the confidence when you present. Yes, sir. I was very nervous about seeing all my teachers here. Thank you very much. As my PG teacher. अग्निहोत्री जी, आपने एक शब्द कहा था, मैं आपको बता दूं कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी, ये नीचे साउथ से है एकदम एंड में, और ऊपर से कुलवंत सिंह जी थे, और पश्मीना जोशी जी जो हमारे जामनगर यानी कच्छ से थे, कलकत्ता वाले रह गए, बाकी पूरा हिंदुस्तान आज आपके साथ था।
कलकत्ता से मनोहर साहू को जोड़ सकते हैं। हाँ नहीं सर, हाँ मेरे बराबर है, को पकड़ लीजिए रे, मैं भी हूँ। जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते पवन हैं। भाई, पवन सर तो कहीं भी पहुंच सकते हैं, पवन है भाई, उनको आप अलग मत जोड़िए, उनको मैं भी सर्वत्र है, कलकत्ता से सर, मैं भी ज्ञान लेकिन वो वायु, क्या है ना कि वो वो तो जैसे ज्ञान कहा वायु था है। ना, नहीं नहीं नहीं, ठकराल सर ने कहा था धुरी है, तो वो भी भोपाल में बैठे हैं, अपन चारों को घुमा रहे हैं। भोपाल, उज्जैन तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। चलो ठीक है। तो मैं तीनों स्पीकर का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। रजनीश गिरी जी ने माफी चाहिए कंटिन्यूस रहने के लिए। आप चर्चा तन विषय संभाषा चालू रखें। मैं मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ से जाने में 45 मिनट लगेगा घर पे, तो मैं आपके साथ मोबाइल में हूँ। और सभी लोगों से प्रार्थना है कि जो कोई भी स्पीकर है उनको अपना, आप टेक्निकल प्रश्न पूछिए, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये यहाँ पर समापन का समारंभ है और हमारे पास विचार बहुत है, बहुत सारी फिलोसॉफीज है, कर सकते हैं नहीं कर सकते वो फिर विषय है। और एक मशहूर हिंदी गीत है, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। फिर मौका गीत मिला तो फिर कभी आपसे मिलेंगे। ये और तो मैं आपने आपसे, गद्य कह दिया, गीत बताइए, गीत से गा के गइए। अरे साहब अभी सब चलते खत्म, चलते मेरे ये मेरे गीत गीत याद याद रखना, रखना, कभी कभी अलविदा अलविदा ना ना कहना, कहना, कभी अलविदा ना अलविदा ना कहना, कहना, चलते चलते चलते। चलते। जी अब ओवर बोलिए टू बात। द पवन कुमार एंड अग्निहोत्री जी, थैंक यू जी वेरी सर। मच। आज आचार्य महर्षि सुश्रुत के पुत्रों ने सुश्रुत जयंती समारोह में जो समा बांधा, वो हमारे गुरुतर, गुरुश्रेष्ठ और गुरुवत, देववत सभी लोग सामने आके हम उनको, हम तुच्छ प्राणी क्या सम्मान कर सके, लेकिन एक सम्मान की जो एक विधा सामने आई, गदगद है हम लोग, आह्लादित हैं, प्रसन्न चित्त हैं। सभी हमारे गुरुवर आज के सम्मान प्राप्त गुरुवीरों को बहुत बहुत स्वास्थ्य की शुभकामनाएं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं, उनका ज्ञान अक्षुण्ण रहे, जिससे हम लोग हमेशा लाभान्वित रहे, और उनके आशीर्वचनों की हमें हमेशा आकांक्षा रहेगी। उसके साथ साथ हमारे आज के जो 862 हमने जो वेबिनार के अपने 3 अतिथि वक्ताओं का ज्ञान प्राप्त किया, विशेष रूप से ये बड़ी खुशी की बात रही कि हमारे पास मैडम पश्मीना जी रही, हमारे पास डॉक्टर रजनीश गिरी जी रहे और डॉक्टर स्मिता जी रही। इन लोगों ने भी विषय विशेष पर शास्त्रोक्त तरीके से कैसे हम तर्क के अनुसार सगर्वा को भी और अन्य तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये चर्चा की। बहुत ही शाश्वत ज्ञान दिया। ये ज्ञान हमेशा अक्षुण्ण बना रहे, और जब IRES प्लेटफॉर्म को, मंच को, उन सब की आवश्यकता हो, हालांकि रोज ही है, हमेशा रहेगी, तो वो हमेशा अपने दर्शन देते रहें, ज्ञान से लाभान्वित कराते रहें। बहुत अच्छा लगा इस पक्ष में महर्षि सुश्रुत को हम लोग कुछ शब्दों में, कुछ तरीके से याद कर सके, स्मरण कर सके, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से लाभान्वित उनके वरद पुत्र सुश्रुत पुत्र के रूप में हमारे 10-12 दिन से जो शोभा बढ़ाते रहे, ज्ञानार्जन कराते रहे, उन सबका हृदय से आभार है। बहुत ही अच्छा लगा। एक कहना चाहिए कि अप्रत्याशित तरीके से, नॉन प्लान तरीके से ये सीरीज बन गई, और इसके साथ साथ हमारी जंक फूड की सीरीज को भी थोड़ा सा, गेहूं के साथ बथुआ को भी पानी लग गया, और हमारी जंक सीरीज जो है वो भी 6-8 अतिथि वक्ताओं तक पहुंची, और कल भी, परसों भी उसकी एक अभी अंतिम कड़ी रह गई है, तो अच्छा लगेगा। और परसों ही शायद हम लोग हेपेटाइटिस डे के नाते 28 का है, 29 को बना पाएंगे। प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी का पहले से ही स्वीकृति आई हुई है, और इन्हीं शब्दों के साथ में हम सबका आभार करते हुए, सबको प्राप्त सम्मान की बधाई तो क्या दें, सब हमारे गुरुवर हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हम लोगों को ऊपर आता रहे, ये खुशी रहेगी, हमेशा आकांक्षा रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में प्रोफेसर पवन शर्मा जी को हम आगे की कार्रवाई के लिए प्रेषित करते हैं, क्योंकि आज औपचारिक वार्ता से फायदा नहीं है, 11 बजने को है। फिर भी आदरणीय कोई क्वेश्चन हो तो किसी का। द्विवेदी जी हमारे पास, आदरणीय द्विवेदी जी मौजूद ही हैं, और उनके दोनों ही आज के कार्यक्रमों में, मतलब हमारी दोनों ही वेबिनार्स, एक सम्मान समारोह वेबिनार और एक सुश्रुत जयंती की श्रृंखला की समापन किस्त के रूप में, दोनों ही पर आपके विचार आमंत्रित हैं। आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर द्विवेदी, नमस्कार, स्वागत। नमस्कार सभी विद्वत बंधुओं को,
सम्मान के साथ में निवेदन है कि मैंने दोनों वेबिनार सुने और बड़ा हर्ष का विषय है कि हमने दिवंगत आत्माओं को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ में जो सुश्रुत सम्मान प्राप्त करने वाले जो विद्वान शल्य शास्त्री हैं उन सभी को मेरी तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन। और साथ में जहां दूसरा वेबिनार में बात आई थी और निबंध के लिए कल भी बात हुई थी, आज भी हुई, तो मृदु मतलब एक तरह से वातानुलोमक द्रव्य देना बुरा नहीं है। विबंध में गाढ़ वित्त पूरी सी अध्याय है और इसको शल्य के रूप में भी मानते हैं, तो वहां पे मल पतला हो और एक बार में आ जाए उसके लिए एरेंट से भी उपयोग हो सकता है या इसके बने हुए जो रसायन हैं उनका उपयोग, कल जैसे मैंने ब्राह्मण रसायन की बात करी उसी तरह से, तो क्योंकि ब्राह्मण रसायन में पंचमूल है और उनका मुख्य अवयवों पर बल्य प्रभाव, रसायन प्रभाव है, रक्षक प्रभाव है, इसलिए उसको देना उचित है। साथ ही जो सुकुमार रसायन या सुकुमार यमक या उसको हम लोग सुकुमार घृत भी बोलते हैं, वो फॉर्मूला दो तरह से प्रस्तुत है, जो अनुकूल लगे वो द्रव्य बलापेक्षणी कसाई कल्पना होती है तो आतुर बलापेक्षणी भी होती है, तो अवस्था के अनुसार उसका प्रयोग करने से वातानुलोमन हो जाए। बाकी मल तो उत्सर्जन अपान का कार्य है, अपने आप करेगा, वात संबंध रहे बस, इसके लिए एरन स्नेह का महत्व है। मृदु अनुलोमन ही उसको बोलेंगे, या जैतून का तेल भी उसी श्रेणी में प्रतिनिधि के रूप में आता है, तो विचार सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। और जो अंतिम गाना था उसी तरह से हम सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, उस लाइन पे हम चलें और जो है जीवे मा शरदा शतम, उस कामना के साथ शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार गुरुदेव, बहुत बहुत आभार आपका। और इन्हीं शब्दों के साथ में अगर हमारे वैद्य श्री राम जी कुछ कहना चाहेंगे, स्वागत है। बाकी बिल्कुल समापन के करीब है, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। बहुत अच्छे विद्वानों का बहुत शानदार कार्यक्रम रहा, इससे ज्यादा अच्छा कार्यक्रम क्या हो सकता है। आदरणीय शर्मा जी जुड़ गए हैं, कमलेश जी, जय हो जय हो। शर्मा, बहुत अच्छे विद्वानों का, और आज तो विद्वानों की भरमार रही है, सारे भारत के विद्वान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सारे विद्वान मौजूद रहे। और गर्भिणी परिचर्या में, गर्भिणी में को जो विबंध की स्थिति होती है उसका भी बहुत शानदार प्रेजेंटेशन रहा। मैंने ये सब सुना अच्छी तरह से, और ये प्रैक्टिकली हम लोगों के जीवन में आता रहता है। गर्भिणी प्रश्न करती है, महाराज मेरे को ऐसा समस्या है, तो हमें कौन सी मेडिसिन उसके लिए लेनी चाहिए, उसका भी हमें उत्तर मिला। अच्छा प्रोग्राम रहा इनका, और सभी का धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका जीवन उज्जवल रहे, और सभी ने अच्छा प्रोग्राम अपना प्रदर्शन किया। आप लोगों को सबको आशीर्वाद, शुभकामनाएं, और आपने मुझे मौका दिया, इसलिए धन्यवाद आपको, वीके अग्निहोत्री जी को, पवन जी को, सबको नमस्कार। जय हो जय, नमस्कार। आपका वीडियो कहीं रुका है, किसी सुअवसर पर वो अवश्य चलाया जाएगा। तकनीकी खामियों की वजह से और समय के अभाव में वो आपकी अभी व्यथा है, हम जानते हैं, लेकिन विस्मृत नहीं हुई है, उसका पालन किया जाएगा, आप चिंता नहीं करिए। हमारे सर्जन और एनेस्थेटिक की जोड़ी, युगल जोड़ी के एक घटक डॉक्टर शैलेश जी भी जुड़े हुए हैं। शैलेश जी को 2 लाइन आप भी बता दीजिए, आप अभी लिस्ट में है हमारे, स्वागत है आपका। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा शैलेश जी, और जी सबों को प्रणाम। हाँ, नमस्कार नमस्कार। मैं एक्चुअली थोड़े से देर से ज्वाइन किया था, मैं पटना से कलकत्ता फ्लाइट में असली समारोह था। जी जी जी, तो मैंने बढ़िया लेक्चर सुने, तीनों लेक्चर सुने, बहुत प्यार से, बहुत बढ़िया। और मतलब हर दिन ज्ञानवर्धन हो रहा है और इतना कार्य हो रहा है, तो बहुत ही खुशी की बात है। और जहां तक एनेस्थीसिया का बात है, तो फिर से मैं कहना चाहूंगा कि अगर मेरी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि मैं एनेस्थीसिया का टीचर भी हूँ, एग्जामिनर भी हूँ, डीएनबी बोर्ड का एग्जामिनर हूँ, थीसिस करवाता हूँ एनेस्थीसिया में। तो अगर किसी भी तरह की कोई क्लास की जरूरत होगी, या कहीं गाइडेंस की जरूरत होगी, या प्रैक्टिकल की जरूरत होगी कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता में अवेलेबल हूँ ऐसे, तो आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव माई सर्विसेज।
तो सर्जरी के लिए हमेशा सर्जरी और एनेस्थीसिया का तो मतलब चोली दामन का साथ है, जो बिल्कुल मतलब बहुत आश्रय संबंध है। तो मैं हमेशा साथ हूँ और हर दिन बना रहता हूँ, तो हर दिन कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन हो रहा है। और बहुत इतने बढ़िया। जवान से लेकर के बुजुर्ग सभी लोगों के, सभी तरह के सर्जन को सुन करके बहुत बढ़िया लगता है जी। एनेस्थेटिस्ट साहब। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, मैं सर्जन हूँ और आप शीशी सूंघ आए थे तो हम अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो हम कभी कैंप करेंगे, उसमें ऑनररी सर्विस मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए अग्निहोत्री धन्यवाद। जी हमारी इनका खोज में अग्निहोत्री जी इनका शैलेश जी का एक रखिए कार्यक्रम, ताकि ये एनोरेक्टल सर्जरी पर हमारी इनका महर्षि सुश्रुत जयंती के उपलब्धि है ये। जी जी सर। रखिए, सुभाष चंद्र वाजपेयी जी बोल दिया कि कार्यक्रम नहीं? रखिए शीघ्रम। सुभाष चंद्र वाजपेयी जी ने कुछ बोल दिया कि नहीं? अभी नहीं बोला सर, अभी नहीं, अभी 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 एक एक करके आमंत्रित करते हैं, हम लिस्ट देख रहे थे। भाषणी जी शायद इस समय नहीं है, उस समय सुबह से जुड़ गए थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना कार्यक्रम चले। डॉक्टर त्रिवेदी जी करके एक माइक खुला हुआ है, अनम्यूट माइक है। स्वागत है आपका त्रिवेदी जी, आप यदि कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी। जय। मैं डॉक्टर त्रिवेदी, प्रोफेसर चिल्ड्रन डिपार्टमेंट, जीजे पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, गुजरात, आनंद से हूँ सर। जी जी, प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ नमस्कार सर। एक्चुअली थोड़ा मैं लेट ज्वाइन हुआ सर, लेकिन कुछ लास्ट का सेशन जो रहा थोड़ा सुना मैंने। आई रियली फील वेरी हैप्पी, और बड़ा अच्छा सर एक कंट्रीब्यूटरी वर्क है, और इसको आगे बढ़ाते रहें और एक ज्ञान का आदान प्रदान चलते रहे, और इसी बहाने सबका एक प्रकार से नॉलेज एक्सचेंज होते रहेगा सर। ठीक है सर, ओके, गुड नाइट सर। हाँ 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 हाँ, आप वीडियो नहीं खोले ना तो दर्शन भी हो जाते। हेलो, नेटवर्क का थोड़ा इशू है सर। हाँ हाँ हाँ, चलिए हमारी अभी आवाज पटल से जितने लोग जुड़े हुए हैं, जरा सा भी किसी को कुछ अपना संदेश देना है तो स्वागत है। बाकी समय की मर्यादा पूर्ण हो चुकी है, 11 समय हो गया है, हम लोग 8 बजे, तो अगर ठीक है सर। हाँ दीदी, हाँ हाँ जी या जी ठीक है सर, ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या सुभाष जी नहीं है, कौशल सर नहीं है सर। नहीं, आलोक आलोक हैं जी, जी डॉक्टर आलोक गुप्ता जी हैं जी। सर बोलना चाहेंगे कुछ? डॉक्टर आलोक गुप्ता जी कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आज आप सब लोगों का मिलन, फिर पुनर्मिलन कब हो, इसलिए वैसे तो हमारा तो प्लेटफॉर्म रोज ही स्वागत है। ठीक है, नहीं है तो रामधर यादव जी है तो बोल रहे हैं, नहीं तो फिर खत्म करो, आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं। हाँ नहीं, अब हम नहीं है, प्रसन्ना जी हैं, पटनायक जी, प्रसन्ना कुमार पटनायक जी हैं, पश्विना जोशी ने अपनी प्रेजेंटेशन दे दिया है। हाँ, महाराष्ट्र समुद्री जी जरूर हैं, अगर कुछ कहना चाहें, सीनियर हैं। नमस्कार अग्निहोत्री जी, हम आप आराम करते हैं, रेस्ट जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्कार। आज समापन है, हमने कहा सबके चलते चलते कुछ वचन मिल जाए तो स्वागत है। चलिए प्रोफेसर पवन शर्मा जी, थोड़ा एक आध को आप बुला लीजिए अगर कोई इनपुट देना चाहे, बाकी समापन की ओर हम पहुंच चुके हैं। आदरणीय समुद्री जी, मैंने कल क्षमा चाहता हूँ, कल बीच में रोक दिया था शायद मैंने। डॉक्टर समुद्री जी, मोहम्मद अशरफ समुद्री। यस सर, यस सर, यस सर। वेलकम वेलकम। यस, वेलकम वेलकम। योर ओपिनियन प्लीज। टुडे इज द कंक्लूडिंग डे। Please do join every day. We are conducting webinars every day. Yes. This platform is yours.
Yes, it belongs to all Ayurveda faculty and students, and really a wonderful platform you have provided, and you have exposed a new faces and given opportunity for budding surgeons. Really a very good opportunity for all of us, and it's an inspiration for students also. Really, I am very happy to participate in such webinars. Please आप कंटिन्यू करिए, ऐसा हम इन्वॉल्व आपके साथ। करिएगा आप स्टूडेंट्स को। हम 2 वेबिनार लगभग रोज करते हैं। 50 वेबिनार पर मंथ का टारगेट रहता है हमारा। कभी कभी 60 भी हो जाती है, क्योंकि ट्रैवल भी रहता है, कभी फ्लाइट में रहता हूँ तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो लेकिन जुड़िएगा और स्टूडेंट्स को जोड़िएगा। आप सभी से मेरा निवेदन। जी जरूर जरूर, वेरी नाइस, एंड for I congratulate you and your team for successful organization of this international webinar. Thank you so much. Thank you so much. संघवी सर। प्रणाम सर। मैं जो है आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट भेजी और आपने इसको मसाल के रूप में 13 दिन तक हम लोगों ने चलाया। कल का एक दिन छोड़कर एवरीडे 3 लोगों ने बोला। कल जो छूट गया था वो चंद्रविद भाषा संबंध कर ले, तो 39 स्पीकर्स ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया। ये तो जस्ट टिप्स ऑफ सुश्रुत है, ये जस्ट टिप्स ऑफ सुश्रुत है। बहुत कुछ है, आगे अपन विषय वाइज करेंगे जो हम गुरुजनों ने अपने को मार्गदर्शन दिया है, निर्देश दिया है, आदेश किया है। फिर कभी थोड़ा विश्राम लेके काम करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका, अग्निहोत्री सर का और आपकी पूरी टीम का ऋणी हूं कि आपने मेरे विचार को जो है प्रैक्टिस में रखा और सभी लोगों को आनंद किया। और सबसे बड़ी आज मेरे लिए गौरव का विषय ये था कि एक साथ में सभी गुरुजन दिखाई दिए। एक साथ में बहुत समय के बाद वो वर्चुअल के ऊपर पहली बार शायद देखे होंगे और उन सब लोगों को भी आनंद आया है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत सारे आशीष मिले हैं। तो ये सब कृपा आपकी वजह से और आपकी टीम की वजह से हुई है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पटनायक साहब कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, मैं आप लोगों को सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं और इतना अच्छी तरह से कर रहे थे। मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना आप लोगों को फॉलो करते करते हो जाता है। ये हमारी 3.5 साल से कॉकटेल पार्टी है। तरह तरह के लोग मिलते हैं। मतलब कहते हैं ना हम लोग, वो निस्संशय वैद्य समूह हो निस्संशय कराना, तद्विद संभाषा बुद्धि विवर्धनाना। तो यही चल रहा है। इसी पार्टी में हम डूबे, आयुर्वेद के रंग से सराब हो रहे हैं। सर का मतलब बहुत हमारे अभी तक के हमारे इस यात्रा में, इस ज्ञान यात्रा या अवर यात्रा में 94-95 इयर्स तक के प्रोफेसर हरिशंकर शर्मा जी, प्रोफेसर हमारे ब्रजभूषण शर्मा जी से लेके और 22 साल, हम समझते 22-23 साल तक के साथ BAMS के 3rd ईयर स्टूडेंट तक ने पार्टिसिपेट किया है किसी न किसी दिन। तो ये भी एक बहुत बड़ी अथा तो दीर्घ जीवतियों में अध्याय व्याख्या श्यामा हो गया कि हम लोगों ने बिल्कुल बाल्यकाल से लेके और शतक की तरफ चलने वाले महाविद्वानों के आमंत्रण मिले हमें और हमने उनका ज्ञान प्राप्त किया। ये इस यात्रा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सभी विषयों को, सभी दिवसों को, सभी 27-28 देशों के प्रतिनिधि लोग जो हमारे आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, मॉरिशस, सिंगापुर, कनाडा, US, UK, नीदरलैंड, पोलैंड, श्रीलंका, सभी जगह से लोग जुड़े, अपने अपने सुविधा के हिसाब से जुड़ते हैं। हम लोगों ने 3-4-5 तो शायद हाइब्रिड भी IRES की वेबिनार्स की हैं। तो आप सब लोगों का सहयोग, आशीर्वाद बना रहेगा। तो देखिए भगवान धन्वंती जयंती तक हम लोग कहीं कुछ पहुंचेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। नमस्कार। अरे मैम, मोहिता जी को नमस्कार। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं अग्निहोत्री जी। जी नमस्कार। जैसे ही आपका ये कोरोना काल शुरू हुआ था ना, जी, उसके तीसरे दिन पे हमने MUHS के साथ में प्रोक्टोलॉजिस्ट का 40 दिन का वेबिनार किया था। अरे तो मैं हमेशा जिंदगी में कुछ भी करता हूँ फर्स्ट करता हूँ। सुश्रुत जयंती भी फर्स्ट हुई
इतनी लंबी। वेरी मच। पहले 40 मनाया और आज आप आगे नहीं बोलेंगे, आगे नहीं बोलेंगे, आगे नहीं बोलेंगे, आगे नहीं बोलेंगे। ये तेरवा नहीं है, ये ब्रह्म भोजन भी नहीं है, उठाना भी नहीं है। ये तो सम्मान है, सम्मान समारोह है। ये तो बेचना है। आज से गरुड़ पुराण शुरू हुआ। लेकिन एक बात का मैं उत्तर जरूर चाहूंगा, जिसका मनोरंजन जी ने भी जिक्र किया, और ये सबसे पहले मेरे सामने अपने पुराने कमांडर जयेश ठक्कर ने प्रश्न किया था। ये सुश्रुत जयंती क्यों है, इसको हम सुश्रुत गौरव दिवस क्यों नहीं कह सकते? ये एक यक्ष प्रश्न है। अब आखिरी में ये प्रश्न सभी शल्य शास्त्रियों के मन में छोड़ दे रहा हूं कि इसका क्या हम उचित उपाय निकालें, क्योंकि सुश्रुत के जन्म का कोई उल्लेख नहीं है। और वो प्लास्टिक सर्जरी डे को हम गौरव दिवस मनाए कि जयंती मनाए, ये आप लोगों के समक्ष एक विनम्र प्रश्न है। ये क्योंकि 3-4 जगह से आया, और सेम चीज अभी वो भी मनोरंजन साहू जी भी पवन सुन ले जवाब मैंने तेरे को पहले भी कहा था। ये जो है ना विद्वान लोगों का काम है, शब्दों की मारामारी है, ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, वो कोई नहीं देख रहा है। नहीं, हम गौरव दिवस भी कहना शुरू कर देंगे ना, हम तो, हमें क्या बुराई है सर? मैं वही कह रहा हूँ, गौरव दिन करे चाहे तुम जयंती करे, फर्क क्या पड़ गया? बात तो वही करनी है ना जो हमको सुश्रुत ने कही थी। नहीं, अगर आदि शल्य दिवस मना ले तो भी हमको भगवान शंकर जी के पास तक पहुंचना पड़ेगा। शल्य तो वहां शुरू हुई थी। ये तो बड़ी अरे यार कहाँ मतलब जो है ना संहिता विभाग के पचड़े में पढ़ते हो, चिकित्सक हो, शल्य हो, काटो पीटो दवाई दो, ठीक करो, मगजमारी छोड़ दो इन लोगों के ऊपर। हमको जो करना है कुछ भी नाम रख लो, नाम कुछ भी रख लो, काम तो वही करना है यार। समारोह होना चाहिए ज्ञान। अरे किस किस की सुनेंगे? मैं तुमको एक मशहूर कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी गधा लेके, एक ही मिनट में खत्म कर दूंगा। एक गधा लेके आदमी जा रहा था, तो लोगों ने बोला साला गधा है क्यों खर्चा कर रहा है, उसके ऊपर बैठ जा। वो बेचारा बैठ गया। तो फिर दूसरा आदमी मिला, बोले साला पैसे को पशु के ऊपर परेशानी नहीं होती, दिन भर तेरा काम किया, तू उसके ऊपर बैठ गया। तो बोले ऐसा नहीं है, ठीक है तो तू उसको उठा के चल। और गधे ने वो नदी में देखा, हिला के खुद गिरा और उसको सेठ को भी ले डूबा। अरे मगजमारी छोड़ो, गधा कौन था, कौन बैठा था, कौन डूबा, काम करो ना अपना यार। स्वीकार कर लिया, सुनो सबकी करो वही जो हमको करना है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि गुरुजनों से और निष्णात लोगों का नाम प्लेटफॉर्म पे रखना। अब मेरी बीबी बोल दे, अर्धांगिनी बोल दे, या मेरे बच्चे की माँ बोल दे, साला को फर्क पड़ता है क्या? गौरव दिवस में सम्मान दिवस तो हो ही गया, सम्मान समारोह हो गया। आप सम्मान समारोह करो तभी गौरव होता है। सर अभी हमारे दूसरे जो गुरु नाम गुरु हैं, चरक जी, आदरणीय चरक जी, उनकी जन्म जयंती आ रही है, चरक जयंती। उस पे भी एक पक्ष रखेंगे हम लोग। कृपया हमें चरक संहिता के विद्वानों का प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिए, रिकमेंड कीजिए। तू मेरे को जो है ना, मैं तुमको नाम सरनामा भेज दूं, कर दे, क्योंकि मैं जो है सुश्रुत को छोड़कर कहीं पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। अरे नाम भी तो देने हैं, नाम दे दूंगा, नंबर भी दे दूंगा। मैं अश्विनी कुमार द्वई हूँ। मेरी काय चिकित्सा की इतनी बड़ी प्रैक्टिस है तो कई इक्विवेलेंट टू द सर्जरी है, नेशनल इंटरनेशनली शुद्ध आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है मेरी। और आप किसी को भी मैं खंडन बंडन मतलब जो अपान वायु की विकृति के बारे में बताया, प्रोस्टोजन की विकृति में कल जो बताया कोई समझ नहीं पाया, तो मैं इंटीग्रेटेड आदमी हूँ। चलिए 11:15 बजा दिए। और अश्विनी कुमार द्वई हूँ। तो मैं आप सब लोगों को हो गया, आज हो गया, मैं आपको जरूर नाम दे दूंगा, काय चिकित्सक दूंगा, जो मतलब जो है अपने प्रैक्टिस और सिद्धांत के द्वारा मतलब जो है ना लोगों बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सभी अच्छा को लगा। सभी का आभार, सभी को प्रणाम। पटनायक जी आप भी रिकमेंड करा कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। जरूर सर, जरूर सर। नमस्कार। आलोक जी नहीं बोले। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि।